Yeah. So the very first important question says that which refer to the given diagram and select the option that correctly defines the label part. तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा ही इसको, ठीक है? तो let us just go on with it कि कौन सा correct part है. So A is representing ampulla. A ampulla को represent कर रहा है and it is the site of blastocyst implantation. So this is wrong. All right. A is basically your infundibulum. All right. पहली बात तो. और ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन तो कराता ही नहीं है. सो दिस इज प्रैक्टिकली योर रॉन्ग आंसर. ऑलराइट, सो दिस इज योर रॉन्ग. बी की अगर हम बात करें तो बी इज योर फिम्ब्री एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द ओवा. सो यस, दिस बी बिकम्स योर फिम्ब्री हो जाएगा. ये आपका फिम्ब्री का पार्ट है, ठीक है, जो कि इनफंडिबुलम को सक्सीड करता है एंड प्रिसीड करता है एंड इट कलेक्ट्स ओवा. सो दिस इज राइट. देन सी बिकम्स योर मायोमेट्रियम. ये वाला जो सी योर perimetrium. All right. Then comes your, so this is also wrong. All right. Then D is your ovary. So ovary is going to secrete HCG. So D ovary to hai, ठीक है, but it is not going to secrete HCG because HCG is human chorionic gonadotropin hormone that is actually released by placenta. This is ultimately released by, just a second. This is ultimately released by placenta. तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा. तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी योर बी. ठीक है.